Okay, so today I'm going to explain the proof of Thales theorem. Thales theorem, or also known as basic proportionality theorem or simply BPT. तो उसका statement क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay? थ्योरम का मीनिंग क्या है कि डी बीसी का जब पैरेलल हमने ड्रॉ किया तो वो AD और DB का रेशियो और वो AE और EC का रेशियो इक्वल, मतलब AD बाई DB एंड AE बाई EC इक्वल होना चाहिए. ओके, अब ये थ्योरम प्रूव करने के लिए यू नीड टू नो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बेसिक ज्योमेट्री. सो बिफोर आई गो टू द एक्चुअल प्रूफ, I will remind you about those two basic things that we need for the proof of this theorem. Look at this diagram. We have two triangles, an yellow triangle and a green triangle. Both are lying between the same parallels. Therefore, their height will be equal. Height of the yellow triangle and height of the green triangle are equal. ये है basic बात. And that's just because you know that distance between parallel lines are equal. Now, let me just bring these two triangles together and you will see that they have the common height. दोनों का height same है, dm. And even if I rotate this triangle, the height still remains dm. If I rotate this triangle, the height is still dm. तो वो एक आइडिया होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब ये रोटेट करने के बाद तुमको आइडिया नहीं मिल रहा है. रोटेट करने के बाद भी वो dm has to be the height of the triangle. Now this is another important thing that you need to know. I think you are very familiar with this diagram. देखो triangle DEB और triangle DEC. Both the triangles are lying on the same base DE and they are lying between the same parallels. Therefore the areas must be equal. ये भी हमारा 9th standard का एक theorem है. क्या है theorem? Two triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. तो ये knowledge भी तुमको चाहिए Thales theorem prove करने के लिए. So we will go into the actual proof of Thales theorem. For that we need a triangle and I have taken a triangle ABC. In this triangle ABC I am going to draw a line DE parallel to BC. It will divide it into two parts. So DE is drawn parallel to BC. Now we have to go for some constructions for the actual proof. From E, drop a perpendicular to AB and also join BE. Okay, ये construction है. And after that some more constructions. From D, draw a perpendicular to AC and join DC. So after all these constructions, your diagram will now look like this. This seems to be a bit complicated diagram with too many constructions. So for the simplicity of your understanding and explanation, I will just separate them into two different triangles. So that will be very easy for us to understand. Now let us focus on these two triangles separately. Look at the triangle on the left side. There you have two triangles. Both have same height. That all I have already explained. Area of triangle ADE divided by area of triangle DBE. वो दोनों triangle का area का ratio में निकाल रहा हूँ. You know area is half base into height. So it will be half base AD into height EM. और नीचे वाला triangle DBE उसका half base DB into height EM है. On further simplifying, you know, half कट हो जाएगा, EM भी कट हो जाएगा, and finally you will get AD by DB. Okay, now let this be our equation number 1. Now we'll move on to the next triangle. उसमें area of triangle ADE divided by area of triangle DEC निकालना है हमको. और यहाँ पे भी हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ बेस AE एंड हाइट DN. और नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया है हाफ बेस EC इंटू हाइट DN. हाफ हाफ कट हो जाएगा, DN भी दोनों में कट हो जाएगा.
तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC मिलेगा AE बाय EC, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. Okay, so we got two important equations and we need these two equations for our further simplification. Now let us move on to our original triangle. उसमें look at those familiar figure. तुमको मैंने ऑलरेडी बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और ये ट्राइंगल DEC इक्वल होता है बिकॉज उन दोनों का बेस सेम है और दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो उनका एरिया इक्वल है. ये ऑलरेडी मैंने समझाया था, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3. सो दिस रिलेशन विल गिव अस इक्वेशन नंबर 3. Look at the left hand side of equation 192 and look at the denominators. Triangle DBE and triangle DEC, उनका एरियाज इक्वल है, मैंने ऑलरेडी बोला है, और दोनों का न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है ना. 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर इज ऑलरेडी इक्वल एंड द डिनोमिनेटर्स फ्रॉम इक्वेशन 3 इट हैज टू बी इक्वल. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we will be able to conclude that AD by DB and AE by EC are equal. See, we got AD by DB and AE by EC equal. थेल्स थ्योरम और एक बार देखो. इन ए ट्राइंगल ABC हमने DE एक लाइन ड्रॉ किया है BC का पैरेलल, तो थ्योरम कहता है कि AD by DB and AE by EC must be equal. हाँ, स्टेटमेंट सबको बाय हार्ट करना है. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio.